Okay, guys, welcome back. Let us give you the let me give you the demonstration of the transformer turns ratio experiment. It is the experiment number 2 of your lab manual. Okay, the transformer turn ratio is given by the formula. Similarly, V1 by V2 equals to N1 by N2 is equals to K, and it is constant. So there are three types of transformer: isolation, step up, and step down. Let us first recall that for isolation transformer, we have N1 is equals to N2, therefore it is V1 is equals to V2. Very simple. For step up transformer, we have N2 is greater than N1, therefore V2 is greater than V1. Okay? And for step down transformer, we have N2 less than N1 and therefore V2 less than V1. So keeping this criteria in mind, so it is N1, guys. For step down, N2 less than N1. So keeping this criteria in mind, this is my auto transformer through which I am going to give the input to my single phase isolation transformer. Okay, its rating is 1 kVA. Okay, what is kVA, guys? Since the coils are inductive, we have inductive power kilovolt ampere. kVA, so not reactive. It is the which power is this? It is the reactive power. Okay, no, not reactive. It is the apparent. But okay, yeah, VA according to the power triangle. What is having? According to the power triangle, this is the true power, and this is measured in watts. This is measured in the volt ampere reactive or kVA R, and this is the apparent kVA kilovolt ampere. So it is kilovolt ampere. This is the apparent power that is taken from the power supply. It is the resistive power that is dissipated in the resistance. It is the reactive power that is dissipated in the frequency dependent, that is the inductance and the capacitance part. So what is the apparent over here? 1 kilovolt ampere. Okay, so what is this? This is your positive and this is your negative. Any of these side can be, this is your primary, this can be your secondary, or this can be your primary, or this can be your secondary. Now directly from the auto transformer we have two inputs. Just connect this input to any of the sides. Suppose I am connecting this yellow one to my upper side and this red one to over here. Okay, this is your one terminal, this is your second terminal, and the input is given through the auto transformer. The output is taken from the secondary. I am considering that this one is the primary, so this one is the secondary. So very parallelly, this is the voltmeter terminal, AC voltmeter I am going to use. Okay, let me put it like this. It is AC voltmeter. This is the yellow wire. This is going on in yellow ke niche yellow. But this is your red ke niche red. Okay, guys. So voltmeter को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है और ऑटो ट्रांसफार्मर को प्राइमरी, ऑटो ट्रांसफार्मर प्राइमरी, voltmeter secondary. Okay, now let us turn it on. Okay, guys, now this is the triangular knob, triangular indication mark that gives you the value of the RMS voltage that you are going to take from the power supply. So always remember, don't go beyond 40. 40 से ऊपर मत जाना. ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 40 पे कर लेता हूँ मैक्सिमम. ठीक है, तो इसको मैं 40 पे कर लेता हूँ. ठीक है, तो मैंने कितने लिया है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे कैलिब्रेशन. ओके, तो मेरे कितने वैल्यू आ रही है, मैंने कितने टर्न्स लिए बेटा? देखो, ध्यान से देखो. आई एम टेकिंग 100% ऑफ द टर्न्स. ओके, 100%. यहाँ देखो कितने, यहाँ से यहाँ तक यूज़ किया, पूरे यूज़ कर रहा हूँ मैंने अपना
प्रोब्स कहाँ फिट कर रखे हैं, यहाँ पे एट द एक्सट्रीमिटीज. सो आई एम टेकिंग 100% ऑफ द टर्न्स. ठीक है. सो और यहाँ आउटपुट पे मैं कितने ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग 100% ऑफ द टर्न्स एट द आउटपुट. तो 100% एट द इनपुट, 100% एट द आउटपुट. सो व्हाट इज द केस, it is the case of isolation transformer. So whatever be the voltage I am getting at the output, see the output voltage 42.04, okay, 41.76 RMS, okay. This is the value of the voltage I am getting at the output. So this is the value that is set at the input. So input is equals to output. So my first case is isolation transformer. What is V1? V1 is nothing, this one 43.04, it is varying, so take a constant value 43.18. So V2 will be nothing but 43.18, directly just start down, 43.18, the turns ratio is 1:1, okay. Since the value is going up and down due to the variations in the AC voltage, okay, सो जस्ट टेक अ कांस्टेंट वैल्यू, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेना बेटा. आइसोलेशन के केस में V1 बराबर V2 होगा, टर्न्स रेशियो क्या हो जाएंगे 1:1. स्टेप अप में क्या होता है बेटा, फॉर दिस स्टेप अप ट्रांसफार्मर N2 द सेकेंडरी टर्न्स आर ग्रेटर देन द प्राइमरी टर्न्स, देयरफॉर द सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज. सो दिस इज द प्राइमरी साइड, दिस इज द सेकेंडरी साइड. For step up we have to reduce the number of turns of the primary side, okay. So keep it at nothing but how much, it is 50%. See the 50% turns I am getting at the primary and 100% at the secondary. तो वोल्टेज क्या हो गया देखो बेटा, जस्ट डबल हो गया. इनपुट कितनी, इनपुट मैंने डिस्टर्ब नहीं करी, इनपुट मेरी उसी पे फिक्स है. किस पे फिक्स है, 43.18. ठीक है. V2 कितना हो जाएगा बेटा, देख लो, इससे जस्ट डबल उसका हो जाएगा 86.16, ओके. सो व्हाट इज N1 by N2, जस्ट गेट द रेशियो. V1 by V2 इज दिस शुड बी इक्वल्स टू N1 by N2. इन दोनों का रेशियो निकाल लो. सो व्हाट इज N1 by N2, V1 by V2. फाइंड आउट V1 by V2. दिस इज V1, दिस इज V2, ओके. नाउ व्हाट इज स्टेप डाउन. स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा बेटा, स्टेप डाउन में N2 शुड बी लेस देन N1. दिस इज योर N2 एंड दिस इज योर N1. तो N2 शुड बी लेस देन N1. तो N1 को ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, 100% कर देता हूँ. N1 को मैंने 100% कर लिया. N2 को मैंने क्या किया, 50% कर लिया. मेरी वैल्यू क्या आ गई बेटा, जस्ट हाफ हो जाएगा वोल्टेज. देख लो बेटा 22.39 एट अ गिवन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज. सो इनपुट वोल्टेज मेरा फिर कांस्टेंट है, मैंने डिस्टर्ब किया ही नहीं, 43.18. और आउटपुट कितना आ रहा है मेरा 22.28. अगेन फाइंड आउट द टर्न्स रेशियो. व्हाट इज N1 by N2 फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है, N1 by N2 बराबर किसके, V1 by V2. V1 पता चल गया, V2 पता चल गया, V1 by V2 फिर फाइंड आउट कर लेंगे. तो फिर आपका क्या मिल जाएगा हमको, N1 by N2. ठीक है, ये आपका है द प्रैक्टिकल ऑफ द ट्रांसफार्मर. सो दिस थिंग यू हैव टू डू इन योर ट्रांसफार्मर एक्सपेरिमेंट. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज इनपुट. You can take any of the side as primary or secondary. This will be the primary, if this, then this will be the secondary. The secondary is always connected to the AC voltmeter. The primary is always connected to the auto transformer. Through the auto transformer we give the input, through the AC voltmeter we get the output. Okay guys, so thank you very much. Keep watching for more videos. I think this is clear. Thank you very much.